Welcome to my YouTube channel, Stars. Hey everyone, I'm Tanya Singla. If you didn't yet subscribe my channel, so please do it fast and like my videos. Today's topic of discussion is law of diminishing marginal utility. After studying law of demand and about microeconomics, macroeconomics, we will study law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility है क्या? Law of diminishing marginal utility states that as product consumed again and again, its marginal utility decreases with each other product consumed. So a consumer will buy the product again having less marginal utility only when it offered at less price, so that marginal utility become equal to price. This inverse relationship between price and demand. Marginal utility आपको पता चल गया. As product is consumed again and again, its marginal utility decrease from each product consumed. जब हम सेम प्रोडक्ट को बार बार लेते रहेंगे उससे मिलने वाली हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी. हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करना पसंद करेंगे. तो एग्जांपल क्या है? You buy 2 kg apple daily at the rate 60 rupees, but on one day seller insists you to buy 3 kg. You will only agree to buy that 3 kg apple when the seller will charge you less price. Otherwise not. So this is known as law of diminishing marginal utility. Now reason behind slope of demand curve is downward. कि डाउनवर्ड क्यों होता है डिमांड कर्व का स्लोप? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डाउनवर्ड कैसे देखते हैं. हम डिमांड कर्व कोई भी स्लोप हमने चेक करना तो हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं कि वो कौन से स्लोप में है. जैसे डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट सी करने में डाउनवर्ड होता है. नाउ इनकम इफेक्ट. When the price of daily need product increases, the real income of individual decreases. As a result, demand for the product decreases. So demand curve slope is downward. Substitute effect. If price of tea increases, demand for its substitute coffee also increases. But demand for tea decreases. As a result, demand curve slope is downward. New customer. When price of commodity falls, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand expands. Different uses. For example, milk has different uses, but if price of milk increases, the price of other product made from milk also increases, and demand for milk and subsequent product will fall. Size of consumer group. When price of commodity fall, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand expands. So these are the reason why demand curve slope is downward. Now exceptions to law of demand. एक्सेप्शंस है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड की कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता. सबसे पहले आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्शन ऑफ गुड्स or goods of distinction, we can say anything we want. Article of distinction. There are certain goods which command social distinction. These are demanded only because of their price are high, especially by rich people to show their status. If their price falls, they lose their quality of distinction and demand shrinks. एग्जाम्पल डायमंड्स एंड विंटेज का. इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता. तो क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं, अगर उनकी जो वो परचेज कर, वो क्यों परचेज करता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं. वो जो कि ज्यादा से ज्यादा महंगे उन्हें परचेज करते हैं. क्यों करते हैं? उनका स्टेटस शो करने के लिए. हाँ, अगर वही प्रोडक्ट की डिमांड, उसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो मिडिल पर्सन भी खरीदने लग जाए और लो लेवल के पर्सन भी, तो फर्क क्या रह जाएगा? तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता कि हम कहें कि हाँ इसके प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज हो रही है. तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ. उसके बाद गिवन गुड्स भी एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं करता, क्योंकि गिवन गुड्स जो होते हैं बहुत इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं. जब उनकी डिमांड कम होती है तो इसका मतलब जो है पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है. These goods are named after Sir Robert Giffen. These are highly inferior goods with positive price effect and negative income effect. Thus, when price of such goods fall, their demand also fall. It is known as Giffen paradox. Now, ignorance. When consumers judge only quality of product by its price, the law of demand is defined. It is due to ignorance of consumer. In such situation, when price fall for a product, then its demand also shrink, or vice versa. Exceptions क्या है? Expectation क्या है? Consumer price rise in near future, and demand for the product will increase in present, even when the prices are high in present already. So these are the exceptions where law of demand does not apply. Example shares है. Shares के price कभी भी increase कर सकते हैं, कभी भी decrease कर सकते हैं. We can't predict that. We can say
की लकीर नहीं है, हम खाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ प्रिडिक्शंस दे सकते हैं हम कि हाँ शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, जैसे आजकल बिटकॉइंस चल रहे हैं। नाउ इमरजेंसी, in case of emergency situation like curfew, war, drought, famine, low of demand fail in such situation, the consumer afraid inavailability of necessity in future buy product in large quantity at present even when prices are high in market. So demand curve in case of low of demand fails, it will be upward sloping. When price rise from P1 to P3, we see that when price rise from P1 to P3, quantity also rise from Q1 to Q3. Fine, showing the positive relationship between price and demand. It shows positive relationship between price and demand. It is a case of law of demand fails. When law of demand fails, these are the exceptions. So thanks for watching video. If you didn't yet subscribe my channel, so please don't forget to subscribe my channel and like my videos.